story which happens to be from West Bengal. There have been glaring contradictions that are coming on her injury in Nandigram yesterday. While addressing the party workers from her hospital bed, the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee claimed that she was injured while greeting people after filing her nomination from Nandigram yesterday. This is contradictory to the claims that she ended up making yesterday. Soon after she was injured, Mamata alleged that 4 to 5 people pushed her. There was conspiracy behind the attack on her. Mamata even alleged that there were no cops present while she was being attacked. Mamata is currently undergoing treatment at SSKM Hospital in Kolkata. Her condition is stable. 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पुश कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगी? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी জ্বর। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। And a full-blown political war of words has now erupted between the TMC and BJP in West Bengal after Mamata's alleged attack in Nandigram yesterday. The BJP, CP and TMC delegation have met the election commissioner in the Bengal over this incident. While the BJP is demanding a detailed inquiry into the incident, the TMC has called it a conspiracy to kill Mamata. The BJP has also demanded that the video footage of the incident be made public. TMC has alleged that the centre changed Bengal's top cops, deputed BJP nominees to plot attack on Mamata Banerjee. Both the political party workers held protests in Bengal over this particular incident. BJP cadre held protests at the location where Mamata was injured. TMC cadre blocked roads in certain areas in the state. The Election Commission has now asked the Chief Secretary of West Bengal for detailed report on the attack by 5 p.m. tomorrow. যে বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং বিজেপির রাজ্য যুব শাখার সভাপতি দুজনেই বলেছিলেন 10 তারিখের পর দেখবেন যে কি হয়। আমরা সেই ওদের ভিডিও ক্লিপও আপনাদের দেখাতে পারি। দেখুন, ওরা বললেন 10 তারিখ মমতা ব্যানার্জি মনোনয়ন দিলেন এবং সেই দিনই তিনি আহত হলেন। এটা নিয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ যে ওরা কি ভেবে বলেছিলেন যে 10 তারিখের পর দেখবেন কি হয়। रिमोट से एक जाकिर हुसैन को उड़ा दिया और सेकेंड ममता बनर्जी के ऊपर हमला। अगर ये आपका तरीका है, इसको चुन चुन के हर कोने कोने में इसको जवाब दिया जाएगा। ऐसा मत करो बीजेपी, इतना घमंडी मत हो अपनी बुलंदी पर। मैंने सितारों को गिरते हुए देखा। अब बंगाल को आघात करेगा ना, बंगाल को लड़ेगा, टकराएगा ना, तो बंगाल सारा देश को टकरा देंगे। इसका नाम है ममता बनर्जी। ये लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, ये मानविकता का बात है, ये हृदय से देखना चाहिए। इसमें राजनीतिक जगह में है
लेकिन ये जो कल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो बोल रहे हैं, जो हमला हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे ये वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং, শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম এ স্ট্রিট ফাইটার, শি লাইকস ফাইটিং স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট, অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং অ্যান্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার। Now, there is a stark contradiction between what Mamata Banerjee says and what the eyewitnesses claim in terms of what transpired right there. I'm going to throw straight across to Suryagni for more on all of that. Suryagni, over to you. Well, 48 hours of medical observation has been issued by the medical board for West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who claimed that she was heckled and pushed yesterday at Nandigram. The Trinamool Congress, they have cancelled all the events related to Mamata Banerjee till the 14th. Have a look at this report. 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चौक हो गया। देखो कितना कहाँ Mamata attacked or victim of a mishap. Breach in security or stage stunt for votes. Questions which have gripped Bengal. For answers, we need to revisit what happened at 6:40 p.m. in Nandigram on Wednesday, where Mamata had filed nomination hours early. Mamata is seen in midst of a poll rally. Videos clearly show contrary to Mamata's claim. Cops were accompanying her. Videos taken from another angle show Mamata traveling in her car with the front left door open. She's seen leaning out of the car, extending left foot and hand to interact with the teeming crowd. Eyewitnesses present on the spot contradict Mamata's claim of attack, saying Mamata's car actually hit an iron pole on the side of the road and hurt her. উনাকে দেখাবার জন্য লোক এখানে মন্দিরে আসার কথা ছিল। উনাকে দেখবার জন্য এখানে লোক প্রচুর জাম হয়ে গেছে। এবারে ওখানে বাড়ানোর সময় ওখানে ওই লোকের চাপে গাড়ির যে বাইলটা ছিল ওনার বাড়ি এরকম মুখ বাড়াতে আর সেই বাইলটা যে লেগে গেছে আমার। दरवाजा तो आधा खोला है और आधा बॉडी ऐसे करके नमस्ते कर रहा है सबको। तो ऐसे करते करते अचानक वो वहाँ एक खंबा लगा हुआ, तो हो सकता है ड्राइवर उसको देखा नहीं, जो खंबा सामने है, तो वो खंबा में दरवाजा लग के एक पैर ऐसे करके है वो दरवाजा लगा, बंद हुआ, पैर में चोट लगा, लेकिन कोई धक्का धक्की ऐसे कुछ देखा नहीं। Some, however, added that cops were away from the convoy. पुलिस एकदम पास में नहीं था, एक तो कुछ दूर पे ही था। भीड़ को कौन कंट्रोल कर रहा था? भीड़ कुछ सिविक पुलिस था और कुछ पब्लिक भी। कुछ लोग एकदम सामने पे ही चल गया और धक्का लगा दो। India Today did a spot check where Mamata claimed attack. नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाज़ा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाज़ा खुला रहता है, पाँव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे यहाँ पे जो पोल है ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है ये साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाज़ा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। The claims by Mamata and what eyewitnesses reveal can shape public opinion on the incident. But only an unbiased probe can reveal who is telling the truth. With Suryagni Roy in Nandigram, Bureau Report, India Today. मेगा
India Today exclusive report on how the BJP Sankalp Patra looks like. The Sankalp Patra, which will be released in a few days from today, may have a very strong push towards industrialization, towards pro-industrial policies, and might offer 1 crore jobs in the next 5 years. Take a look at this report. BJP is pulling out all the stops to win Bengal, and its manifesto reflects the ambition to form the first saffron government in the state. The Sankalp Patra will be out in the next few days, and India Today has managed to get some details of what the Bengal manifesto would look like. For the starters, the BJP is promising transparent and corruption-free governance. It is likely to adopt a pro-industry policy framework and a state Niti Aayog to coordinate with the central Niti Aayog to take forward the economic development of Bengal. Moreover, BJP will highlight the migration of skilled workers and entrepreneurs from Bengal as signs of the deteriorating investment climate in West Bengal. But the biggest of all is creating 1 crore jobs over the next 5 years. The Prime Minister's assurance of Rs 18,000 annually to 75 lakh farmers is also likely to find mention. A crackdown on jihadi communal attacks will be yet another promise, and along with it, a special law against love jihad. With Polami Saha in Kolkata, Bureau Report, India Today. Tamil Nadu is the other state that is heading into elections, and the preparations are all in full swing as far as the parties locking their seat-sharing pacts are concerned. TTV Dinakaran's AMMK has announced its first candidate list, and TTV is going to be contesting from Kovilpatti. The party has also formed an alliance with the Social Democratic Party of India. Dinakaran's party has agreed to give 6 seats to the SDPI in the upcoming polls, which are scheduled for 6th of April. The SDPI will bat its candidates from Alandur, Ambur, Tiruchipalli, Thiruvarur, Madurai Central and Palayankotai. This comes after talks between Kamal Hassan's MNM and SDPI failed to yield fruitful results. Remember, Asaduddin Owaisi's AIMIM has backed 3 seats in the AMMK alliance. Let's get you what the seat-sharing pacts really look like, beginning with the AIA-DMK alliance. You've got AIA-DMK with 180 to 190 seats, BJP with 20 seats, PMK with 23 seats. Next up, we've got the DMK alliance in Tamil Nadu as well. DMK 174 seats, Congress 25 seats, MDMK 6 seats, VCK 6 seats, CPI 6 seats, CPIM 6 seats again. The AMMK alliance, AIMIM 3 seats, the SDPI 6 seats. And last but not the least, we also have the MMK alliance, and let's look at what that seat sharing pact really looks like. MMK with 154 seats, SMK with 40 seats, and you have the IJK with 40 seats again. Welcome back and thanks for staying with us here on India Today. After that India Today Conclave East and the roaring success, India Today now brings you its 4th edition of the India Today Conclave South. It's a power-packed lineup. It's going to definitely leave you awestruck, and we can say that with utmost amount of confidence. Here's a small preview of what can be expected. The political mercury is rising, and the scorching winds of change are once more blowing through the peninsula. May 2nd will decide many fates. But before the mandate is decided, we bring you from Chennai the biggest thought leadership summit. Both the chief ministers of Tamil Nadu and Kerala will be in attendance. For a national perspective on Dravidian politics, here JP Nadda
and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Union Minister S. Jaishankar will be joining us for a detailed conversation on the Modi government's external engagements. Hear the call of the challenger with M.K. Stalin. Kannimozhi Karunanidhi will speak to us on rising above the challenges of being a woman in politics to script success. Former Finance Minister P. Chidambaram will join us on the conclave stage to delve into what needs to be done to get the economy back on track amid a pandemic. The new entrance in Tamil Nadu politics, legendary actor Kamal Haasan, will be joining us, donning the politician's hat this time. Sasikala's nephew, TTV Dinakaran, will get candid on what his political strategy will be. Spiritual guru and Isha Foundation founder, Sadhguru Jaggi Vasudev, will be joining us to discuss the importance of debate and dissent in a democracy. After his government collapsed, former Puducherry Chief Minister V. Narayanswamy tells us why he's confident of returning to power in the Union Territory. The Governor of Kerala, Arif Mohammad Khan, and Governor of Telangana, Puducherry, Tamilisai Soundarajan will be in attendance. Watch out for the most fiery face-offs. Congress leader Shashi Tharoor and BJP's Ram Madhav on politics of polarization versus politics of appeasement. Young leaders Tejasvi Surya and Supriya Srinath will face off on the politics of divide. And it's not just the biggest faces of politics, but entertainment too. Actor Aditi Rao Hydari will join us for a discussion on how she balances films in the north and south. You can also catch Yuvan Shankar Raja perform live on the conclave stage. That's it from me, Chaiti Narula, on the state of war. Stay tuned to India Today. I'm joining you in just about a bit after this short commercial break. On to the point. We're discussing the Maharashtra COVID crisis. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.